तेरी फर्स्ट एसएसबी थी 2021 में, दिसंबर में। दिसंबर 2021। ठीक है, तो वहां पे तू रेकमेंड होता है। फिर पूरा होल 2022 में जितनी भी एसएसबी थी वहां स्क्रीन आउट होता है। ठीक है, टोटल 3 एसएसबी थी वहां पे। राइट। फिर यहाँ से तू निकल के आता है यहाँ पे फरवरी में। तो हम लोग फिर डिस्कस करने लगे थे, साथ में ही बैठते थे। ठीक है, तो फरवरी में तेरा आता है टीजीसी 137 का। और मतलब तेरा रिकॉर्ड अच्छा रहा है, जब भी स्टेज वन के को क्लियर किया है तो रेकमेंड होके ही आया है। ठीक है, तो यहाँ पे एक सुरेश ने क्वेश्चन पूछा है कि भाई आस्क प्रशांत, डिड ही फॉलो एनी सोर्स लाइक रीड बुक to get variety of theme and pat. राइट। सो अनकन्वेंशनली study using Instagram, I would suggest, because Instagram is generally not a place people To go study, to read. to gain Right, knowledge. right. And they do all the other stuff. So another SRT is, अब तो शायद नहीं आती, पहले आती होगी, कि you are going with your female counterpart in the night after a movie and some three strange men come around you. He. So I'll take an example कि ऐसे में what is the SSL looking? Are you ready to leave the lady behind and run for your life? अपनी जान Or बचाओगे कि दूसरे की रक्षा करोगे? तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और आज हमारे साथ हैं प्रशांत अस्थाना। रिसेंटली रेकमेंड हुए थे और अभी मेरिट लिस्ट में भी आ गए हैं, ऑल इंडिया रैंक 3 फॉर टीजीसी 137 और रेडी टू ज्वाइन इंडियन मिलिट्री एकेडमी। वेलकम प्रशांत। you, प्रशांत मेरे छोटे भाई जैसा है। ये छोटा भाई है प्रद्युमन अस्थाना का, जो मैंने उसका भी वीडियो डाल रखा है। अगर आपने उसका वीडियो देखना है, ऑल इंडिया रैंक 1 उसकी आई थी एफकेट में और टीजीसी 136 में। एंड करेंटली ही इज टेकिंग ट्रेनिंग फ्रॉम एयरफोर्स एकेडमी, तो आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम लोग जनरल डिस्कशन करने वाले हैं रिलेटेड टू वेरियस टेक्निक्स ऑफ एसएसबी। हम लोग बहुत सारी चीज़ों को लेंगे और एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे कि क्या अप्रोच होना चाहिए एसएसबी को लेके और उनकी वेरियस टेक्निक्स को लेके। तो प्रशांत यार, तुम रेकमेंड हुए हो ट्वाइस, एंड उसमें से एक में हुए हो टीजीसी 137 में और एक बार हुए हो नेवी के लिए। ठीक है, तो अपनी एक जर्नी का गो थ्रू दे दो ताकि लोगों को पता चल जाए तुमने कैसे जर्नी स्टार्ट की थी और कैसे ये रिकमेंडेशंस मिले थे। तो एक बार बता दो कैसा रहा तुम्हारा जर्नी एसएसबी का। right. So the SSB journey started on 4th of November 2021. So that is when my SSB call-up letter came that my SSB is on 14th. So I was preparing for CDS at that time, and I remember CDS was on 14th. So in my mind it was कि CDS देंगे, रिटर्न क्लियर होगा, हाफ कैट का, we'll take SSB March. So, but then the SSB came in within 1 month. So till 14, I prepared for my CDS exam, and then I started preparing for my SSB with my elder brother. So he had his own preoccupation. So जितना हुआ अब एक महीने में आप as a fresher how much you can study, right? So जो हुआ सो हुआ. I remember before leaving my house for Bangalore. So my first SSB was in for SSB Bangalore for Naval Observer Entry. So my brother was saying कि stage one there will be a stage one, and then there will be a stage two. You'll have to do this in stage one, all of this so much in stage two, and I was just listening to him. So then I went to my SSB there, got screened in. Then I was on call with my elder brother. Ki now what should I do? Then with God's grace, I got recommended in my first attempt. Then some stuff happened, and I could not join the academy. After that, this was in July 2022. After that, I started giving SSBs again when I could not join the academy. So then it has been a little up and down. I went for Army Bhopal in July itself. I remember my last exam was on 8th of July and my SSB was on 9th of July. So I gave my final exam and then I went to Bhopal and got screened out. Then I went to Kapurthala. आप भी थे वहाँ पे भाई के हाँ साथ, हाँ, right? तो मैं प्रद्युमन के So साथ था, हमारा वो था। हाँ. So your reporting was on 25th, mine was 28th. So again, I got screened out. I met you शायद there. I हाँ हाँ, से तो हम लोग बाहर गए थे वहाँ पे, हाँ। right. हम्म, So that was one day before my reporting. So I हम्म, got screened out from TGC 136. Then I went to 1AFSB there. Again, I got screened out. So after recommendation, it was three continuous screen outs, and that was that academy joining thing. And these three screen outs happened throughout my 2022. Then my elder brother he went to the academy in January, and then in February, on 9th of February, I reported on 14 SSB Prayagraj, previously Allahabad.
So there I got screened in and did my whole again. Finally got to see the stage two again after 1.25 years. So I went there and again, fortunately, I got recommended from 14 SSB. ओके, तो मतलब उतार चढ़ाव सब कुछ देख लिया है। ऐसा नहीं है कि बहुत स्मूथ जर्नी रही हो, रिकमेंडेशन से सीधा रिकमेंडेशन मिल रहा हो, बीच में तुम्हें स्क्रीन आउट वाला देखना पड़ा है फेज। Not only screen out, it was the whole year and could not joining academy is another thing, right? या या वो तो डेफिनेटली है कि आप मेडिकल इशू था ना तेरा। It was some I ठीक was in there for aviation branch, right? तो ठीक है। उसमें मेडिकल इनपुट है। ठीक है, तो मतलब तेरी फर्स्ट एसएसबी थी 2021 में दिसंबर में। दिसंबर 2021। ठीक है, तो वहां पे तू रेकमेंड होता है। फिर पूरा होल 2022 में जितनी भी एसएसबी थी है वहां स्क्रीन आउट होता है। ठीक है, टोटल 3 एसएसबी थी वहां पे। राइट। फिर यहाँ से तू निकल के आता है यहाँ पे फरवरी में, तो हम लोग फिर डिस्कस करने लगे थे, साथ में ही बैठते थे। ठीक है, तो फरवरी में तेरा आता है टीजीसी 137 का। और मतलब तेरा रिकॉर्ड अच्छा रहा है, जब भी स्टेज वन के को क्लियर किया है तो रेकमेंड होके ही आया है। ठीक है, राइट। तो ये चीज राइट। बहुत ही अच्छी है यार तेरी। तो तूने यार इस चीज को भी डील किया है। बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स हैं हमारे जैसे, मैं तो 19 अटेम्प्ट वाला हार्डकोर रिपीटर हो गया हूँ, और मेरे से बहुत सारे लोग पूछते हैं यार कि ये जो स्क्रीन कंटिन्यूस स्क्रीन आउट्स होते हैं इसको कैसे झेलना है। क्योंकि यार सेल्फ डाउट क्रिएट होने लगता है लोगों में। तेरे को भी हुआ होगा कि यार मैं पहली बार रिकमेंड हुआ, अब ये लोग मुझे पहले स्टेज वन ही क्लियर नहीं करने दे रहे हैं। तो कैसे तूने यार इसको कैसे वो किया, टैकल किया, कैसे बनाया अपने आप को, जो सेल्फ बिलीफ होता है वापस कैसे लेके आया। Right. So generally, there's a notion that people say stage one is luck, and then there are people who say stage one is sheer hard work. If you perform, you will get through it. So my first screen out it was because I did not perform well in OIR. So I worked upon that. I remember there were 45 questions and I could do 33 and 34 questions only. So I was very good at OIR. I am still at, but that 6 months of gap, December, then it is July. So that little hand got slow. प्रैक्टिस। हाँ। So practice exactly. So that brings to the first hard work quality that you need to stay consistent and be in shape so that whenever you are performing, you give your maximum output. So I rectified that in my first Bhopal wala attempt. Then I went to TGC 136 Kapurthala in September. There, this luck thing happened because I did good OIR because I had prepared for it very well. My brother was there. He like gave me sessions. Jesse, you have to orate your story. And then GD went flawless. My story was very good. Everything was good. I got screened out again. So that was the luck factor. Then I went to AFSB for the first time. There my OIR was very good. My story was very good. Something happened in my GD. So it has been one thing or the other why I could not clear stage one. So your brother is in academy, going to academy, you have left the academy, and for the whole year you're doing that. So that thing sometimes used to bother प्रेशर ki आता है। bhai, हाँ हाँ। what is the solution to this? Because we know that we are recommended once, हम्म। right? But how do we do it again? You're not getting the chance. So there might be people who are 1, 2, 3, 4, 10 times screen outs. या So I would suggest them not to prepare only for stage one and keep preparing for stage two as well. We'll get into the details of stage one, but mind wise, how to maintain your composure, I would say do not focus this on stage one only. Prepare for stage two as well. It will give you a relief that next time you are going for SSB, you will get chance to perform stage two. So if you're only preparing for stage one and going to SSB and you get screened, then what will you do? फिर अगली बार You आएंगे। cannot, right? You cannot sit in SSB and study, हम्म। right? SSB is purely a place where you have to perform. हम्म। So the whole thing about how to maintain the composure is to still prepare for stage two, be positive and keep assuming that next time you will get to stage one. What should I do for stage? ठीक है, तो यार हम लोग इस वीडियो में ना स्टेज वन की बात करने वाले हैं, ओआईआर और पीपीडीटी के बारे में बात करेंगे, और स्टेज टू में जो साइक टेस्ट होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और जो हमारा जीटीओ है और इंटरव्यू है उसके लिए एक अलग पार्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया अपने दर्शकों को कि ये मेरे छोटे भाई जैसा है, लेकिन ये बातें बहुत ही मैच्योर करता है। और इतना सीखा है ना मैंने इससे, हम लोग डिस्कस किया करते थे साथ में बैठ के। तो ऐसा लगता था कि भाई ये कोई साइकोलॉजिस्ट है या कोई, मतलब जो प्रोफेसर होते हैं ना वैसी बातें करेगा, मैच्योर सी।
तो मैं इसीलिए इसको बुला के लाया हूँ कि यार लोगों की हेल्प हो सके। तो हम लोग शुरू करते हैं पहले यार स्टेज वन से। ठीक है। तो सबसे पहले यार ओआईआर की इंपॉर्टेंस बता दे, और तेरा क्या अप्रोच रहता था ओआईआर को लेके। Right. See, my perspective of both stage one and stage two is that first of all, for whole of Force, Air Force, Army, Navy, anything, and with SSBs, nothing is extra, Yeah. right? So if there is a notion that OIR is not checked or something, right? So it is checked first of all. Secondly, when you are approaching your OIR, do maximum of them, and all the things that are in SSB in stage one are reflections of stage two. So whatever they will test in stage two, there is it is the stage one is a reflection of it. So OIR is basically to check your intelligence. So if you are doing well in your OIR, there is a notion that this candidate, okay, he is a good candidate. Let's see him in person. Because OIR is a sheet, right? So when you are writing a story, right, just at the same time, simultaneously the OIRs are checked. So for Okay. OIR, there is a book for R.S. Agarwal, right? OIR practice. Yeah. Yeah. People can get it. And how I used to prepare for OIR after Bhopal is do 10 questions of all the kind of OIR questions that come daily. Okay. So, like five types of, let's say there are five types of verbal, five types of non-verbal, नॉन 10 वर्बल। questions of each. And it does not takes a lot of time to do 10 questions. So, when I used to sit and study, right, in the morning, my first half an hour was always used to be for OIR. ओके। In that half an hour, I used to do OIR only. Because when you are in morning, you're a bit fresh, your brain works. रात को 1:30 बजे जब आप you are exhausted, you cannot do OIR, हाँ ठीक। right? So that is one thing. Again, the approach would be do not leave any OIRs blank. If there are 50 questions, do all 50 of them. You do not know the answer, you just circle something. हम्म। That is my approach for OIR. ठीक है। यार तो मैं भी यहाँ पे बताना चाहूंगा, जैसे मैं भी ऐसी सिमिलर ओआईआर की प्रैक्टिस करता था। हमारे पास कुछ सेट्स होते हैं, उनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग। उसी के साथ मेरे पास एक टेक्स्ट बुक का था ऐप। उसमें ना ओआईआर के मॉक टेस्ट दिए हुए हैं, वो टाइम के साथ आपको पूरा प्रैक्टिस करवा देंगे। तो आप वो 2-3 बार कर लेंगे तो टाइम प्रेशर वाली चीज भी आप हैंडल करना सीख जाएंगे। तो इसके साथ यार हमारा Also, ओआईआर हो जाता है। हाँ। add something there. या। Not only just doing the OIR questions, when you're writing OIR in your sheet, now first one make 1, 2, 3 lines and write. हम्म। Make some figure, right? If the sentence, if there's some sentence, which word should be omitted from the हाँ sentence. So ठीक। let us, if the word is and, then write and, हम्म। because it stimulates the time you take to mark that black circle in your sheet. हम्म। So generally, what people do is they have 50 questions. घर पे they do it very well, but while doing it in SSB, वो circle करने में time waste हो जाता हम्म। है. So वो तो है। stimulate that as well. ठीक है, तो यार शुरू करते हैं पीपीडीटी से रिलेटेड क्वेश्चंस, क्योंकि पीपीडीटी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फॉर स्टेज वन, कि आपके अगले 4 दिन कहाँ पर आप बिताने वाले हैं। ठीक है। बहुत सारे लोगों को निराशा होती है स्टेज वन में। तो उनकी हेल्प करने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे, क्वेश्चंस लेते हैं। बहुत सारे कम्युनिटी पोस्ट पे क्वेश्चंस आए थे, उनसे स्टार्ट करेंगे ताकि हम लोगों को इन डेप्थ पता चले कि यार एस्पिरेंट्स जानना क्या चाहते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले यार पीपीडीटी से रिलेटेड क्वेश्चन है एक सुरेश का। तो वो जानना चाहता है अप्रोच फॉर पीपीडीटी इन स्टेज वन, स्पेशली जीडी। ठीक है। तो कैसे मतलब अप्रोच करता था पीपीडीटी की पिक्चर्स को, स्टोरी को, जीडी को। Right. So the whole of PPDT is divided into few subsections. First is looking at the image. That is for 30 seconds when the image is shown. After that, you will get a 1 minute to write the action part of the story. And then this four more minutes to write the story. Then you get some time and you move into a hall, you sit in a semicircular manner. And there you individually narrate your stories within under 1 minute, 40 to 45 seconds, let us say. After that, this GD starts. So first of all, looking at the image, what do you have to look at the image to come up with a good story? So for any scenery you ever look, there's some closer objects and there's some far objects. So look at the foreground, how many characters are there, their age, gender, mood, that is important. Then look at the background. What is it? Is it like some office, some industrial building, there's some river, mountains, gardens, whatever. So you won't be having, let us say, a civil engineer standing in front of a swimming pool, ओके। right? So
whatever the profession of your character is, it should match with the foreground and his own dressing sense, Okay. right? So you cannot have a chemist wearing a dhoti kurta, right? He will have a lab coat. So look carefully at the image and determine what is the age, gender, of mood of the characters, number of characters. After that, think how you can come up with a positive story. If there is something negative in this image, assume it to be mild. Let us say an accident image. It is very common to have. So in that image, assume that it is a mild accident. There is nothing fracture, bleeding, etc. until it is visibly there. Assume the negativity to be mild and correct it if it is a negative image. If it is a normal image, think something creative, relate yourself to the image and come up with a story. And if there's something which is obviously positive, then build upon it. So that is how you look at the image. Once you're done with that, you are with a theme. You write one sentence for the action, and then you can start with the story. About writing the story, there should be a structure to it so that the psychologist can easily understand what the candidate is wanting to say. So generally, my approach for writing the story is in one first sentence, I write introduction of the character. So let us say Arun, 24, was a final year BTech student studying in IIT Delhi. Short, crisp. Arun, age. This age is only for TAT. For PPT, you don't have to write the age because you have already filled the box. Okay. So you write your name, no need to write the age again in the story. Age, profession, whatever your profession is, whatever you've chosen. Some good organization where which can reflect that the character is a good person. So if it's a Yeah. doctor, you can go for AIMS, engineer for IITs, etc. Hmm. And then a geographical location so that you get to know where all of this is happening. Let's say IIT Delhi. So you know now it is in Delhi. So if it is like a water or dry area related, I will not say it is in Meghalaya. Hmm. I will say it is in Rajasthan. Hmm. So whatever you're choosing your profession, it should be logical and it should be practical as well. Once you are done with that, second thing is introduction of the goal. What the story is about. What will the reader be going to be reading the next 5-10 lines? So introduce your goal, whatever your goal is, whatever you have thought after looking at the image carefully. Then the third line should be introducing a team, small team, especially for PPDT. That means there is a one character, you do not need to import a team. In PPDT, not always import a team, but it is better you have two people at least. 3, 4, it is very good. If it is a friend's trip, then jitne log hain, the more the merrier, right? Hmm. So have a team, then you start with the actions. How will you achieve the goal you have introduced in the second line? Hmm. While writing the actions, use commas. Do not use he will be doing that, after that he will do this. Comma. He'll get a tent, he'll book the tickets, comma, likewise. Save your time. कंसाइज भी हो Once you जाएगा. are done with the action part, Hmm. once you are done with the action part, come to completion of the goal. Finally, after the collective effort of the team, whatever the goal is, happened. Once you're done with the completion of the goal, show the emotions of the hero, your character. So he's happy to do something for people, so he shows gratitude. A hero is someone who is full of thankfulness, morality, who shows gratitude, who is a nice person, who has good ethos. So show gratitude towards your teammates, congratulate them that they have done achieved something, right? So with that you complete your story. So what are the if I have to list it down, line number one, the introduction of the character, then introduction of the goal, importing a team or starting with a how did all of this started, then 3 to 4, 5 lines for your action part, then completion of the goal, 1 or 2 lines for gratitude part. After this one, wherever you want to, in the action or in the introduction of the goal, add a thing called as what is happening in the image or the picture. Because generally what happens is people preconceive from their home, I will make this story. And the image is something and you are writing something else. So my personal approach towards PPT, especially writing of the story, was that
After reading the story, the psychologist should feel that the candidate has written the story while sitting in the hall. Yeah. He should feel that the candidate came up with the story in the hall after looking at the image, not before that. So this it is better to make sure that you are writing a story which feels natural. The more natural you are, the better you can express it. You don't have to filter stuff out, whether it is you're speaking or you're talking to someone. And अगर आप अच्छे हैं तो आपकी story अच्छी, right? So तो ये that is चीज how you write this. यार प्रशांत, तूने बहुत ही अच्छी चीज बोली है। मैंने ये भी चीज खुद भी एक्सपीरियंस की है कि जब हम लोग घर से ही एक चीज मन बना के आते हैं ना, कि मैं ये स्टोरीज जानता हूँ, ये स्टोरीज मुझे चिपकानी है, कैसी भी पिक्चर आएगी मैं ऐसा कुछ चिपका दूंगा, तो हमारा दिमाग इतना आलसी है ना कि वो एक नई चीज, क्रिएटिव चीज की तरफ जाने से पहले वो सोचेगा यार मैंने एक स्टोरी लिखी हुई है, उसको पढ़ा हुआ है, तो उसी को एक बार लिख देते हैं और खत्म करते हैं, क्यों इससे मेहनत करानी है। तो ये चीज वहां पे Right. ना सेल्फ बिलीव पैदा नहीं करता, क्योंकि आपने देखा होगा कि एक नई पिक्चर आ गई, लेकिन स्टोरी आपने कोई और पिक्चर की डाल दी, तो आपको लगेगा कि यार खुद ही विश्वास नहीं होगा कि यार मैंने तो ये प्री कंसीव्ड आइडिया लिख दिया है। तो जब नरेशन करेंगे, जीडी में हम लोग लोगों से बात करेंगे, तो वो कॉन्फिडेंस भी नहीं होगा बंदे में कि यार मेरा तो यार ये प्री कंसीव्ड आइडिया है। तो उस कॉन्फिडेंस, जो विश्वास होता है ना, वो चेहरे पे दिखना चाहिए कि भाई मैंने तो यहीं पे सोच के बनाई है और कनेक्ट हो रही है। Also there is this thing ना, बचपन में अपन बोल देते आउट ऑफ सिलेबस। हाँ हाँ हाँ। सो बचपन में वी कैन ब्लेम कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया। यहाँ पे कोई आउट ऑफ सिलेबस इमेज जैसे कुछ नहीं होता, राइट? कुछ नहीं होता। सो इफ यू आर रिलाइंग ऑन योर नॉलेज कि ये स्टोरी में लिख के आ जाऊंगा, व्हाट इफ हम्म, समथिंग एल्स कम्स, हाउ विल हैंडल? वही। तो राइटिंग अ स्टोरी देन एंड देयर इज बेटर। या वही एक चीज मैं भी बोलना चाहूंगा यार, कि जब आप स्टोरी लिख रहे हो ना, तो ये मत सोचो कि बस मुझे खत्म करनी है स्टोरी, खत्म करके फिर घर ही चले जाओगे। अगर खत्म करने जाओगे ना स्टोरी को, तो वो बेनिफिशियल नहीं है। उससे अच्छा थोड़ा सा और सोच लो, 30 सेकंड अगर स्टोरी सोचने के लिए दे रहे हो, तो वो 1 मिनट है जिसमें हमें बॉक्स भरना होता है, उसमें भी सोच लो। कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दी नहीं है। राइट। तो आराम से टाइम लो, अच्छी थीम सोचो, ताकि कुछ मीनिंगफुल और सेल्फ बिलीव आए तुम्हारे अंदर कि हाँ कुछ अच्छा किया है मैंने, कनेक्ट हो रहा है। एंड इफ यू कैन लुक एट द इमेज एंड गेट द आइडिया इन लाइक 5 seconds, राइट हाँ, योर स्टोरी आराम से, स्टार्ट अच्छी स्टार्ट राइटिंग में। राइटिंग। हाँ, हाँ, ये राइटिंग मैंने अच्छी लिखो, फोकस ऑन योर ये राइटिंग। मैंने प्रद्युमन में देखा था। ये चीज मैंने प्रद्युमन में देखी है। 10-30 सेकंड दिया था टैट में हम लोगों को, वो 10 सेकंड में पिक्चर देख के स्टोरी राइटिंग शुरू। मैं देख रहा हूँ भाई मेरा भी चल रहा है, मैंने बोला यार ये तो शुरू कर चुका है, अभी तो पिक्चर अभी भी वो हो रखी है, प्रोजेक्ट हो रखी है। तो दैट्स ग्रेट। अगर आपको जल्दी आइडियाज आ रहे हैं तो आप जितना जल्दी हो सके लिख दीजिए। A तो little advice for Tat here. Tat may do not do this. Look at the image हाँ। first. हम्म। ठीक है, तो यार एक और क्वेश्चन है पुनीत शर्मा का। ठीक है, इन पीपीडीटी इफ वी रीराइट द एज इन द बॉक्स एंड सम कटिंग इज देयर इन द स्टोरी, विल इट इम्पैक्ट द परफॉर्मेंस, और हाउ टू बी इफेक्टिव इन जीडी? Right. So cutting is not allowed anywhere. So think of it as, that रेड strict फ्लैग। English teachers exam, that no cutting is advisable. So prepare yourself at home so that you do not do any cutting, because when you do cutting, it gives an impact that the candidate is confused what he is या going to write. या That is exactly why you are cutting something. Right. So it is not a good thing to portray in front of the psychologist. So cutting is advisable not to do. And coming to the next part is, I'll take narration pehle, then we'll go to G. ओके। So the narration mein, now the assessor, the psychologist has read your story. Now when you are sitting there, now your turn comes. First of all, be cheerful about that you are when that you're reciting, going to recite a story. Do not take it as a task that you have to narrate. You have to recite a story, and you do not recite a bhoot ka story in a fireborn ऐसे डल माहौल में. You're excited about reciting that story, right? So be excited about whatever good story you have written till now. So when you're excited, your voice will be high, right? You will have a throw in your voice. So start with a greeting, good morning, friends, or do not look at the SSS. Go in a good one flow, have a good flow in your story, recite it in a loud, clear, and a commanderly manner, so that you can portray that you have it in you. Your communication skills are good. Now, about the whole of it, the way, see this lecture that you have to recite for 3 minutes, right? And you have your interview.
So the GTO and IO will see that this candidate is ready to and readily and doing very well while reciting a story for 1 minute. He can also perform well in lecture it or in your interview. So your narration is very important in that aspect as well. So have a good command on your English, work upon it, and be cheerful about your story. Look at the group, do not look at the assessor. So what I do is if there are 10 lines, 5 lines here, 5 lines here, something like that, not बराबर very बांट दिया. precise. So look at the whole of group. And sometimes people say that हम कहाँ बैठे हैं group में, it also matters. It does not matter. You are doing your best. Then comes the question, GD. How do you handle the GD? So when the last person is done with the narration, the GD automatically starts. Now what happens with repeaters is if there are 20 people, at least 17 will be speaking for sure. हम्म. Right. So if those 17, 16 people are speaking, you will not be heard by the GTO. And that person is also a human. हम्म. So why I personally do is in the beginning everyone is like this many characters, age, gender, mood. So when everyone is done with 1, 2 sentences now, I say, okay, friends, all of us seen as 3 characters, age between 23 to 26. Let us settle with 24. हम्म. So that is how I open in a GD. Then once the age, gender, mood is done, we will start with the theme. So about picking up a theme, I'll go back to narration and say that while you are not narrating, listen to other people's story. Listening is as equally important as reciting stuff. So if you are not listening to other people while they're narrating, you will not understand where the group dynamics will go when the GD will start. So if you let us say I'm chess number 16, right, and chess number 18 has come up with a good story. Chess number, let's say 7 or 8 has a good story. Then I can start say, okay, friends, chess number 8 and 17 or 16 has a good story. 16 is obviously the 18 has a good story. So let us build upon that. So that is how you can enter your GD. Then again the group will shout for around 1 minute, फिश again मार्केट. 1.5 again, right? That happens in like the repeaters wala batch. So again, for the action part of the story, when it has been discussed in GD, do not stick to your one idea that you have come up in your mind. So let us say we are planning a solar powered city, right? So if you come up an idea ki solar street light अपन लगाएंगे city में. So if the group is talking about something else, do not wait for 2 minutes and say the same idea. Keep listening, whatever the group is listening, discussing then and there. Come up with an idea, say it. Do not wait for your chance and write and recite the same idea in front of the group. Keep thinking, keep listening, keep coming up with new ideas. Now, what happens is there's this personal statement which you would have heard from me कि जो ग्रुप कर रहा है आप अगर वही करोगे तो आपका भी वही रिजल्ट होगा जो भीड़ का हो रहा है. That जो is ग्रुप real. का हुआ. हाँ. Right. So do not be part of the fish market. That is what I will say. Because if no one is listening, the SSs are listening to you. That is their work to do, right? So keep saying, let other people speak as well. Because if you are not listening, what if the group nominates you as the person to give the group story? What will you say if you're not listening to the group? So listen, speak, come up with ideas in between. Whatever the idea is, say it then and there. Do not interrupt people and just maintain a good posture. So, like if I'm a person who is very built, so I cannot lean forward a lot, right? It will create a dominating aura in front of the SSL. If I'm a slim person, I cannot be sitting like this because it shows that I got intimidated by the fish market. So apart from that, that mannerism, you have your chest out, sitting like this. It is also very important. Apart from what do you have to say? Everything And then, matters. right. And in the end, when the GTO says, okay, 30 minutes, 30 seconds are left, come with a conclusion. Then you can combine the stories. If the group is divided into two halves, combine the two halves and come to a story. You can start summarizing. Okay, friends, we've seen the characters. This is the thing. Likewise, you can do that as well. So that is my whole personal approach to GD, and it has worked for me after I talk to you people
कार्तिक भैया, अनुराग भैया हैं। या हम लोगों ने स्क्रीनिंग पे बहुत डिस्कशन किया था जो तू स्क्रीन आउट हो रहा अरे था ना। इट वाज लिटरली द होल समुद्र मंथन की किया क्या जाए स्क्रीन। यार देखो, स्क्रीनिंग तो ऐसा पार्ट है ना कि जो हो गया उसको भी नहीं पता वो किस वजह से हुआ है। ठीक है, हम लोगों ने ऐसे बंदे देखे कि क्या स्टोरी लिखी थी, क्यों हो गया, हम लोग आके बाद में डिस्कस कर रहे हैं। और जो अच्छे अच्छे बंदे होते हैं वो भी बाहर आके बोल रहे हैं, अरे भाई मेरी स्टोरी तो रिलेट भी कर रही थी, तब भी भगा दिया मुझे। मैं भी तो आउट हो गया राइट। हाँ यार, एक एक और क्वेश्चन है अरिजीत का। हाउ टू कंप्लीट द नरेशन विद इन 45 to 50 सेकेंड्स। हमने जनरली देखा है कि नेक्स्ट बोल देता है असेसर आपकी इंट्रोडक्शन और थोड़े बहुत एक्शन सुन के। तो ऐसा कुछ स्ट्रेटेजी बना के जाता था ताकि जल्द से जल्द आपका नरेशन खत्म हो जाए। At home, what you can do is practice so that you complete in 40 seconds. You put up a timer and you practice your narration घर पे, जैसे everyone does. हम्म, In the hall, first of all, do not think that the assessor has skipped. As in, if you were in 30 seconds into your narration and he said next, do not get intimidated by it. It might be positive thing na, that he has listened to your story, he liked your story, so he's selecting you. Now he's going to the next. हम्म, And no one said that if he's saying next means you are rejected. या So एग्जैक्टली। take it positively. If he has interrupted you, assume it to be positive, मतलब उसको right? अप्रोच समझ आ गया, अंडरस्टैंड है। He got a ballpark idea what is the story about. And about narration, if you write your story, action part of the story, comma use करके, then the length of the story decreases, and हम्म। then eventually you get to recite it in 40 45 seconds or whatever the time. प्रशांत, हमने स्टेज 1 के OIR और PPTT के बारे में बात कर लिया। अब बात करते हैं स्टेज 2 के सबसे पहले टेस्ट के बारे में, साइकोलॉजिकल टेस्ट। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारा होता है थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट। ओके, तो इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं और व्यूअर्स हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यार, कमल शर्मा का, कि अंकुर, दिस टाइम स्पेसिफिकली आई रिक्वेस्ट यू टू आस्क हिम टू शेयर हिज पर्सनल रिटर्न स्टोरीज ऑन सर्टेन PPTT और टैग पिक्चर्स स्टोरीज, ईदर अटैच देम ऑन स्क्रीन और सेंड देम ऑन टेलीग्राम। ओके, तो यहाँ पे तो डायरेक्ट स्टोरीज ही मांग ली गई हैं। तो यहाँ पे Uh, प्रशांत क्या कहना चाहोगे? यार ये तो फिर आपने मेरे को देखा हुआ है करते हुए, आई विल नॉट बट आपने देखा है मुझे सामने सामने स्टोरी बनाते हुए, राइट? हाँ। So we'll get into it. पहले if there's a question which talks about the briefing of that, we'll go through the basics, then we will take the examples. ओके, सबसे पहले ना, अपना जैसे एक क्वेश्चन है, सुरेश ने पूछा है, भाई प्लीज आस्क हिम अबाउट व्हाट वाज हिज अप्रोच फॉर साइक टेस्ट, स्पेसिफिकली थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट। ओके, तो कैसे मल्टीपल आइडियाज आए, क्या अप्रोच रहता है तेरा, इसको लेके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर साइकोलॉजी टेस्ट, टेस्ट इन ब्रीफ। तो स्टार्ट करते हैं कि थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट को कैसे अप्रोच करता है और तेरा स्ट्रेटजी क्या रहता है। Right. So it is very similar to PVDT. The only difference is you don't have to fill up the box, and here you can import characters. So PVDT में you have to write age, gender, mood, right? So जो character दिख नहीं रहा उसके age, gender, mood कैसे लिखूंगा? So you cannot import any characters. Here you can import characters firstly. Then again 30 seconds for the image, and again 4 minutes to write. This continues till 11 stories. The 12th one is a blank one where you can write some story that you can prepare it your. So my approach again to look at the images, foreground, background, क्या है? What is your character wearing? Characters are there. What is the setting? You listen to that, you see it, and then you come up with a good story. Now, what I used to do is brainstorm with people like you to come up with more themes on same image. So, for example, sometimes let us say there's an image. Uh, there's two men who are talking, and both of them are in formals. So there are a number of people who wear formals. There are a number of professions. So what you can do in that? There's another thing that the more you read, the more your horizon of thinking will increase. And the psych will also see that this candidate has a bigger horizon of thinking. He is aware of his surroundings. He is inquisitive. He learns. He reads more, and he's intelligent about his approach. So first of all, read, and then if you can add some government schemes into your writing of the story, it shows awareness. It is a plus point. So my approach
about TAT while writing is the same structure. And while discussing with friends like you get to think more. First of all, your brain should work very fast while you are looking at the image. So you have to come up with the whole of the story so that for the next 4 minutes you have to write it. Because the instruction is to write the story in 4 minutes, not think and write the story simultaneously. So जो काम है आपको 30 सेकंड में कंप्लीट कर दो सोचने का. So that only your hand will be working. This again gets to the same question. Cutting नहीं होगा इस वजह. If you are clear with what you are writing. So that used to be my approach. Another thing is profession. So generally what people do is कि एक प्रोफेशन उठाया उसी से ब्लड डोनेशन करवा रहे हैं, उसी से जो है घर बनवा रहे हैं, उसी से स्वच्छ भारत हो रहा है, उसी से जो है सब कुछ हो रहा है. So your selection of your profession should be in accordance with your goal. So if you're looking at image, come up with a goal, and this is my story is going to be about. Have an appropriate profession about it with it, and have 12 different professions. It shows your broad way of thinking. Your horizon is big. This candidate is learned, he is intelligent, and he is inquisitive that he is having knowledge out of his own domain. So if I am an engineer, I still know about doctor, डॉक्टर, and I still आईएएस, आईपीएस. know, right? I know about forest officers, right? I know about fire department, likewise. So have different professions. If it is possible to have 12 different professions for 12 students, is the best thing to do. ओके. तो यार एक क्वेश्चन है, जैसे तूने अभी बोला कि रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. रीडिंग इंपॉर्टेंट सिर्फ टैट के लिए नहीं है, पूरी एसएसबी के लिए, पूरी लाइफ के लिए है. क्योंकि अगर आप Right? रीड नहीं कर रहे हैं तो आप बहुत ही लिमिटेड नॉलेज के साथ कहीं भी जाएंगे, किसी के साथ डिस्कशन भी करना होगा तो बहुत ही लिमिटेड स्कोप में कर पाएंगे. तो यहाँ पे एक सुरेश ने क्वेश्चन पूछा है कि भाई आस्क प्रशांत, डिड ही फॉलो एनी सोर्स लाइक रीड बुक टू गेट वेराइटी ऑफ थीम एंड पैट. Right. So unconventionally, study using Instagram, I would suggest, because Instagram is generally not a place people go टू स्टडी, to read, टू गेन right? नॉलेज. Right. And they do all the other stuff. So, like watching reels. So, go up to Instagram, and I would suggest few pages. There's a page called as Barely Opinionated. There's a page called Tatva India. There's a page called The Better India. And then there's more such pages. Then it comes to the IS, Ardrishti IS, all of that. Go to Instagram and read the posts there. And there's one more thing which will help in GD as well. My Government India, there's an Instagram page. Have these 3-4 pages, and they would be enough for your whole general awareness part, especially My Government India and the Better India for your psychology part. ओके, तो मतलब तुम्हारे रिकमेंडेशन में इंस्टाग्राम का भी सहयोग है. अरे बहुत बहुत. So my interview was not ready to accept that I study from Instagram, but I do. तो उसको कन्विंस कर लिया था. हाँ, it is easy ना. If you ask question, you give the answer, उसको समझ आ जाती है, हाँ, पढ़ा तो है. ये रियलिटी है. It is इंस्टाग्राम के reality. पेजेस बता दिए होंगे. हाँ, see, it is like you, if you're a natural person, you do not have a filter. Then, if your natural self is good, you will portray it out in the SSB itself. And if your natural is good, they will see the good. And if they're seeing good, the result will be good, which is the recommendation. So live a good life, things will fall into place of you. मुझे मुझे प्रद्युमन की बातें घूम रही है दिमाग में. सेम एग्जैक्ट लाइन मेरे को प्रद्युमन ने भी बोली थी. जैसा सोचोगे वैसा ही होगा. ठीक है. थिंक पॉजिटिव Right. एंड द रिजल्ट विल बी ऑल्सो पॉजिटिव. तो एक क्वेश्चन है यार, पुनीत ने पूछा है, डू वी नीड टू राइट दैट स्टोरीज रिलेटेड टू आवर पीआईक्यू. Okay. You don't necessarily have to write the story about your PIQ, but if there's some image which you can relate to your PIQ or your life, write it down. So let us say there's very famous notice board wala image, right? So if that image comes, so I was part of my quiz club and some debate society. So I write that I organized a debate competition or helped my juniors to participate or represent my
college in some inter college debate competition, right? So you don't have to push yourself, but if the image is something which you can connect कि यार ये तो मैंने पीआई लिखा था, लाइफ में कभी मैंने ये किया है, then you can obviously relate it. That consistency in character, I would say, is very important. यार एक क्वेश्चन ये पूछा है कि पुनीत ने, इन टैट हाउ टू असेस आर स्टोरी एंड गेट मल्टीपल आइडियाज इन टैट, एंड इन टैट एवरी पार्ट ऑफ द इमेज मस्ट बी रिटन, और सम पार्ट ऑफ द इमेज से भी हम लोग वी कैन मेक अ स्टोरी. Right. So there are two ways to categorize images. That is what I feel. So first is positive, negative, neutral. Right. Another way is what it is about. It is some adventure related story. It is like you are planning something out, or it is with your family, likewise. And then if I have to put the cherry on top, is another way, number of characters. So there's sometimes one single character, there are three or a big large group of 10, 15 people. Sometimes rarely, but there's no character at all. Right. ओके. So how do you approach with this is first of all determine what kind of theme you are going to write a story on. Right. So let us say if it is an adventure related story, some mountains are there and there are beautiful people. Build upon that. Right. And then there's this family setting. घर में चार लोग, visibly there are two elders of opposite gender and two kids. Then think of something likewise. So it highly depends in that what the image is. However, ओके. your approach should be take all these things together: the type of image, the positive negative allergies, and number of characters. So if there is an image jump accident हुआ है, so there are a good number of characters, it is a negative story. Then assume the negativity to be mild. Accident ही तो हुआ है, क्या हम्म. करें, होता है. थोड़ा बहुत खरोच आ गई होगी, वो अपना हाँ, हो गया. बैंडेज लगा के ठीक हाँ, हो गया. और क्या. अब अगर कोई घर में बैठा हुआ है, उदास है, दिख रहा हम्म. है, विजिबली यू कैन सी इट इज उदास, जरूरी थोड़ी है कि वो फेल हो गया होगा एग्जाम में. हम्म. किसने बोला? माय क्वेश्चन इज, जो आपने पूछा कि कितना उसको किया जाए, कितना इमेज में से लिया जाए. माय क्वेश्चन इज व्हाट एवर यू आर राइटिंग डाउन, इज इट देयर इन द इमेज और नॉट. हम्म. राइट. इफ यू आर राइटिंग समथिंग, इट शुड फील कि हाँ, ये इमेज देखने के बाद दिमाग में. हम्म. ठीक है. अब तुम छोटा सा एक्सीडेंट हुआ, उसमें बारिश भी करवा दो, रास्ते में पहुंचने में जो है ट्रैफिक भी आ गया, इट इज नॉट इन द इमेज, व्हाई आर यू राइटिंग. तो अगेन कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, जितना इमेज में है उतना आप अपने दिमाग में लाओ while thinking of the story. You can write the details visibly. If there is a factory जिसमें से वो आ रहा है, तो you can write factory के सामने two people बैठ. So that again comes to the what is going on in the image वाला point. हम्म. Right? So if you take out one line in your story which tells that what is going on in the image, it will be beneficial for you. It will uh, be more natural that this image is written than the story. तो यार सीधी बात ये है कि जो आपको जो पिक्चर दिखाई गई है, स्टिमुलस है, वो आपकी स्टोरी का पार्ट होना चाहिए. ठीक है. Right. ना ज्यादा ना कम. बस आप जो दिखाया गया है उसको स्टोरी का पार्ट बना दो, या उसके बेसिस पे अपनी स्टोरी बना हाँ, दो. ठीक है. जो ज्यादा वाला चीज आपने बोला कि लेट्स से हाँ. देयर आर थ्री पीपल हु आर टॉकिंग, हम्म. सो डू नॉट पुट थ्री पीपल कि अरुण, विख्यात एंड सौरभ, थ्री पीपल एंड दे आर डिस्कसिंग समथिंग. अरुण said this, then विख्यात said this. Is only one thing that is required in your image. हम्म. Do not write a conversation in your story. हम्म. Right. तो इतना भी ओवर डिटेलिंग की जरूरत नहीं. ओके. तो यार एक क्वेश्चन है, ऑलिव ग्रीन ने पूछा है. ठीक है. जय हिंद अंकुर भैया, आप ना अपकमिंग इंटरव्यू में पूछना कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर साइकोलॉजी टेस्ट, एंड ये जो हमारी साइकोलॉजी है, इसको हम अपनी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करें, या मतलब उसकी प्रैक्टिस करें, या किसी असेसर से रिव्यू करवाएं और उसके अकॉर्डिंग करें. फर्स्ट ऑफ ऑल जय हिंद टू हिम. देखो, अपनी और उसकी साइकोलॉजी वाला चीज, everyone has different psychology, everyone is different, everyone is unique, so their psychology will be different. However, if you can take some coaching or get yourself assessed by some assessor, it is perfectly fine to do that, because
स्कूल के एग्जाम के लिए भी तो हम लोग पढ़ाई करते थे ना, मम्मी से बोलते थे ना कि मम्मी बताओ हम्म। आंसर सही। इट्स परफेक्टली फाइन टू डू दैट। एंड टेकिंग कोचिंग इज not like you are getting yourself mechanically trained. It's just that you are taking a way. What is the right approach to it? Because me as a person, I have so many things in my personality, but I need to know what the assessor is looking for. Right? So it is perfectly fine for you to go to some assessor and get your stories assessed, take guidance. However, do not copy paste anyone's answer, which generally happens in VAT. उसमें एक सेंटेंस लिखना होता है, right? Because they're not looking at your VAT, they're again I'll say they're looking for consistency in your character. तो कहीं पे तो आप नॉर्मल इंग्लिश लिख रहे हो, कहीं पे बहुत हाई लेवल वर्ड को यूज कर दिया, साइक को लगेगा पक्का ये कहीं और से आया है, ये राइट? कॉन्ग्रुएंस नहीं है तो भाई, टैट में क्या लेवल है और बैट में क्या लेवल है। हाँ, वो लगेगा कि ये लिखा ही इसमें है कि नहीं, यू विल डाउट दैट, राइट? So there's no need to very high-fi in English as well. It's not uh, a test of your grammar or your like vocabulary and dictionary wali skills, right? So you can go to an assessor and get yourself tested. Do not copy paste anyone's answer. That is, I will say, build yourself again out of syllabus वाला चीज कुछ अगर ना देखा हुआ आ गया तो you will have to handle. या, मतलब कॉन्फिडेंस ऐसे ही आएगा जब आप खुद ही ब्रेनस्टॉर्म करेंगे, फिर आप स्टोरीज लिखेंगे। वरना अगर जो असेसर ने बता दिया अगर वही स्टोरीज हैं, तो वहां पे जब कुछ नई स्टोरी आएगी तो बहुत ज्यादा वास्ट डिफरेंस हो जाएगा, जो तुम्हें स्टोरीज पता है और जो खुद बना रहे हो, तो बहुत ज्यादा गैप दिखेगा। Right. तो यार। And there's one more thing हाँ। which I say that have confidence in your competence. That is, I would like to say. वेरी So इंपॉर्टेंट। because you are highly confident, but you do not have the confidence, you won't portray it. But you have a lot of confidence, but competence नहीं है तो दिखाओगे क्या, right? So the balance is very important. या श्योर। तो यार जैसे यार जैसे कमल ने सबसे पहला क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, कि यार उसको कुछ थीम्स देखनी है, जैसे क्या अप्रोच रहता है तेरा बनाने का। तो हम लोग ना तेरी एसएसबी की पिक्चर्स ही लेते हैं, जैसे तूने अभी 14 एसएसबी इलाहाबाद से रेकमेंड हुआ। तो यार अपनी कुछ थीम्स बता, स्टोरीज बता जिसपे तूने थीम्स बनाई थी इस वाली एसएसबी में। फिर मैं कुछ 3-4 पिक्चर लेता हूँ, उस पे भी अपन लोग डिस्कस कर लेंगे, ताकि लोगों को क्लैरिटी मिलेगी कि क्या अप्रोच होना चाहिए और कैसे हम लोग मल्टीपल आइडियाज को ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हैं। Right. So जितना I can remember from my SSB, there was one image which came. So there was a man who was in a forest having a camouflage and a gun, a rifle or something, and there was some civilian approaching him. It was a still, but it was obviously that he was going there, and there was a water body behind the man. Who was in the camouflage. So what I had written was that there was this assistant conservator of forest. He is posted in Sundarbans, and he was given the task to survey the protected area for the fisheries. So one day this person, civilian, comes towards him. So he goes up to him, talks to him who that civilian is, and it comes out to be a tourist. So he navigates the tourist to some whatever his destination पोस्ट। is, saying that this ओके। is a restricted area for the civilians. You may take some different paths to reach your destination. So he politely says that he tells the route because he's like, around take those takes I was pushing, so he knows the routes. So he tells the civilian, this is the route, please take it and go to your destination. So that is how I perceived it. And I had talked to a few people in my SSB itself. After Psych, you would have basic और discussion. डिस्कस करते ही हम लोग। हाँ। Right? And you can, it is inevitable. You have to participate in it. So, which people were saying कि that guy was a bandit, is smuggling बना दिया. And I said, and see the approaches. वो बंदा दिख रहा है, चलो उसने धोती कुर्ता टाइप कुछ नॉर्मल पहन रखा है, कुछ भी पहन रखा है, जब तक उसके हाथ में कोई व्हाइट पाउडर ना हो, ठीक हम्म। है, जब तक उसके हाथ में कोई नाइफ ना हो, कैन नॉट assume him to be a bad guy, स्मगलर right? बना दे रहे हैं। जब तक आपको visibly there is no negativity in the image, do not import negativity at all. हम्म। There was this one example. Second, एक और image I can remember is, so there was a man in formals and he is having a bag. There's a forestish Greenland type garden,
there's a tree and 4 7 kids are sitting under the tree. हम्म. तो वहाँ पे just say people say that how to think of a variety of stories. So I came up with this story that there's this teacher of science, 8th, 9th class, कोई भी बना लो, and he decides to introduce an innovative way of teaching his kids. So he talks to the principal and approaches the parents and takes the kids to some picnic in the outskirts of the city. वहां पे he introduces them to nature, खाना वाना, the students bring it, and he teaches some small section of the chapter there, and this good environment, good weather, हम्म. so the students enjoy, and he is happy that the students are getting more interested into the syllabus, ओके. right? That was one thing which I came up with looking at that park or forest type of cheese. Ismail is one add-on which I will tell after the next story. So the next story is that there is one lady, young, in हम्म. salwar kurta, standing in front of gate with her arms wide, as if she is not allowing someone to enter, and there is a younger man who is rushing towards her. ओके. So especially I came up with 2 3 things. One, you can make a Raksha Bandhan hai. Okay. हम्म. So the brothers, one you can make ki, anniversary hai parents ki. So what the brother and the sister does is the brother goes to the office, takes a half day ka leave, goes to some shop जो पहले से order कर रखा था पापा मम्मी के, वो rings लेके आते हैं anniversary rings, हम्म. and then वो गेट पे दे देता है, he goes into the room and उसको अच्छा से सजा सजा पापा मम्मी के सामने ले आते हैं. That is हम्म. one celebrative story. One, if you have to add some fuzzy stuff, is so there's this elder sister and उसका भाई है, तो he is coming back to home uh, after let us say NDA का छुट्टी से, समर and टर्म she या is जो भी टर्म है, टर्म ब्रेक. she's very wholeheartedly, she is very close to her brother, and finally the brother is coming home, so she's very happy and she is like wanting to engulf him. That is one another story. So now this brings me to the main point which I wanted to say. The hero of the story जो मैंने बनाया था एनिवर्सरी वाला, ठीक है, they can plan a normal anniversary केक ले आओ कर लो, but that ring वाला element is something not everybody does. डिटेल्स. तो जैसे हम मैसेज में हम्म. बोलते हैं ना भैया कि हीरो ऑफ द स्टोरी, तो who is a hero? Hero is not someone who can like snap his finger and हवा चलने लग जाए, बारिश हो जाए, बादल गिराए. That is not हम्म. a hero. हम्म. A hero is someone who gives hope that ओके. whatever hardships you have seen in your life, it is now come to a pause. Now that the hero is here, everything in your life from now on, it will be good because he is there. So he's ओके. elevating something. He's doing something well. And now again, a difference between an employee and a hero is an employee will do the job, but a hero will do something out of his duty. So what हम्म. extra you are doing out of your duty? So I go back to that teacher wala image, हम्म. जिसका story था. So the last line I wrote was, after looking at the inquisitiveness of the students, he decides to take them on more such trips. फ्रीक्वेंट That is ट्रिप्स. something out. हम्म. That is something out of his duty. उसका काम तो क्लासरूम में पढ़ाना है पढ़ाना है, क्लासरूम में, हाँ. right? But still he is doing something out of your duty. So when for people when they are writing the story, think whatever your hero is doing, what extra out of duty he is doing good for the people. That is Yeah. a true hero, I would say. So जितना you can do good for yourself, जितना you can do good for the others, उतना अच्छा. That shows like good thing you are thinking of others as. ओके. तो यार ये तेरी एसएसबी से रिलेटेड पिक्चर्स थी और उस पे जो तूने थीम्स बनाई थी, ठीक है. मेरे पास कुछ टैग पिक्चर्स हैं जो एसएसबी की बहुत ही फेवरेट पिक्चर्स हैं, ठीक है. उन पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. तो एक पिक्चर है यार जिसमें एक यंग कैरेक्टर होता है, ठीक है. 15 to 16 या 20s का भी मान ले, अर्ली 20s का. वो एक रूम है, उससे बाहर जा रहा है. एक ओल्ड कपल बैठा हुआ है, ठीक है. और वो फीमेल जो लाइक हम लोग उसको ग्रैंड मदर बना देते हैं, ग्रैंड फादर बगल में खड़े रहते हैं. तो वो इमोशनल से लग रहे हैं. तो इसमें क्या तेरे को आता है थॉट? Okay. ठीक है, कुछ बुरा नहीं, सब कुछ अच्छा है. अब अगर आंसू निकल रहे हैं विजिबली किसी के,
ठीक है। हाँ, तो किसने बोला है कि दर्द दुख के आंसू है, खुशी के आंसू हो सकते हैं, खुशी के आंसू हो राइट? सकते हैं। Who said crying is for only negative emotions? So if the female is weeping or sad, you can say कि let's say अपना फाइनल ईयर मास्टर्स का स्टूडेंट है, ये तो वो आया था छुट्टी पे, ग्रैंड पेरेंट्स सर मस्त उसने टाइम स्पेंड किया, उनको खाना वाना खिलाया, घुमाने ले गया। अब नाउ व्हेन ही इज लिविंग फॉर हिज अगेन छुट्टी के बाद, तो द ग्रैंड मदर इज इमोशनल दैट माय kid is leaving. So he assures her, again out of character, he assures her कि दादी अब मैं और फ्रीक्वेंटली आऊंगा, अभी मैं 6 महीने में आया था ना, अब मैं 3 महीने में आऊंगा, 2 महीने में आऊंगा। So he assures her that he will give more frequent visits to her, and the grandmother is now at ease. Now he will visit. ओके। So you make a light, mild family emotional story around it. ओके, देखा यार, मैं यही बताना चाहता कि कितनी बेसिक स्टोरीज होती हैं। हम लोगों को लगता है कि यार कुछ बहुत ही हाई फाई हाई टेक स्टोरीज लिख रहे होंगे रिकमेंडेशन के लिए। लेकिन प्रशांत, तू जैसे स्टोरी बता रहा है ना, अपनी जो एसएसबी से रिलेटेड भी जो टैग की स्टोरीज थी, और ये जो मैंने जैसे एक स्टिमुलस दिया, ये बेसिक स्टोरीज यार, पहले तो लगता है कि यार नहीं, इस पे तो नहीं रिकमेंडेशन होते होंगे। हम लोगों ने देखा है कि यार कुछ तो यूनिक लिखना होगा, ठीक है, तो इस पे ही हो रहे हैं, ठीक है। तो एक सेकंड पिक्चर है, एक कैरेक्टर है, और बारिश हो रही है, स्टॉर्म आ रहा है, थंडर स्टॉर्म आ रहा है, और वो कहीं पे जा रहा है, ठीक है। तो इस पे तेरे को क्या लगता है? अच्छा, तो अगेन जैसे मैंने बोला था, इट इज अ वन कैरेक्टर एंड कुछ तो एडवेंचरस कुछ हो रहा है। सो think of how why a person will be in a थंडर thunderstorm स्टॉर्म। going somewhere. So where is he going? It was he's visibly walking. So you can just make him some teacher and बोल दो कि he is going to his school so that बच्चों का जो है एग्जाम्स आ रहे हैं, तो he is wanting to take one final क्लास जिसमें उसको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देने हैं, ठीक है। सो मेक हिम ऋषभ maths teacher in some Delhi ka DPS school. He one day in the morning he saw that this big thunderstorm, and on the same day he was having some extra class for the kids for their upcoming final exam. So he decides to take up his notes and puts them in a poly bag, takes out his umbrella and rushes to the school. And when he goes there, he gets himself fresh, tells the kids all the important questions, clears their doubts, and finally the kids went on to give a really good exam and have a good result. Finally, he is happy that the kids were benefited and congratulates the kids on their hard work and achieving good marks in the exam. So, as a story, Banadu, you can something mild. This image is actually, I feel, is to see if the candidate would take up the courage to, perform his duty in such a condition. ओके। So मेरे को ये लगता है कि थोड़ा ये समझना में जरूरी है कि ये इमेज दिखाई क्यों जा रही क्यों है, जा रही है? राइट? बहुत इमेजेस है दुनिया में, राइट? हाँ, यही ये क्यों आई है? हाँ। हाँ, ये सोचना भी समझना इम्पोर्टेंट है। हम्म। यार, तो एक और पिक्चर डिस्कस करते हैं, वो मोस्ट फेमस है, ठीक है। एनसीसी कैडेट्स हैं, ठीक है, या तो वो पेड़ के नीचे बैठे होंगे, एक कैरेक्टर होगा सामने खड़ा होगा, या जीप खड़ी होगी उसके सामने एनसीसी कैडेट्स खड़े होंगे। तो क्या स्टोरी बनाते हैं इस पे? ओके, तो एनसीसी में सबसे इम्पोर्टेंट इज जो ऐसे प्रोफेशन, तो डू नॉट मेक हिम सम रैंडम एनसीसी का, मेक हिम सम सीनियर अंडर ऑफिसर टाइप, कि हम्म। हाँ इज एट सम अथॉरिटी टू डू समथिंग, ठीक अच्छा। है। सो आई हैव सीन दिस इमेज एंड मैंने जो स्टोरी बनाया था, इट वाज, देख तो बहुत सारी एनसीसी इमेजेस हैं, तो आई डोंट नो कौन सी वाली की बात हो रही है, बट व्हाट आई मेड वाज दिस सम सीनियर अंडर ऑफिसर, जो भी आप नाम लेना चाहो दो, एंड in based in Delhi. So he talks to his senior and asks him that he wants to organize an NCC camp for his juniors. So he takes the permission with his batchmates. He first determines the number of people who will be coming, arranges tents for them, determines the location in the outskirts of the city. Then, with the collective effort of the group, the camp was set up there. The seniors teach the juniors about camp setting up, night navigation. You can add map reading, firing, etc. And after 2 weeks of collective effort and participation from the juniors, the camp was a success. So he thanks his teammates for their consistent effort and brainstorming ideas, working on ground, and thanks his senior.
for giving him the opportunity to conduct something for his juniors, right? ओके। So that so this is a story which I generally make in such a situation. ओके, फुल ऑफ एक्शंस। ठीक है। तो यार थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट का यहीं पे रोकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है। तो अब मूव करते हैं हम लोग वर्ड एसोसिएशन टेस्ट के बारे में और दूसरे टेक्निक्स के बारे में। तो यार एक क्वेश्चन आया अखिल शर्मा के द्वारा कि वैट के टाइम हेजिटेट हो जाते हैं, तो इसको कैसे कवर करें, और तेरा अप्रोच क्या रहता है वैट को लेके, और कैसे प्रैक्टिस करता है तू? That actually whole of the psyche is about discussion to increase your horizon. So that में I used to discuss with my friends. मैंने अपने बड़े भाई के साथ बैठ के बहुत डिस्कशन किया है. So that is how you come up with your new ideas. हम्म। That maybe there are, I feel, three kind of words. One is negative, obviously visibly negative. ठीक है. हम्म। One is mild positive or relation, like kabhi I've seen grandmaster, I've seen हम्म। father brother, relational positive. हम्म। And then there are words that are abstract: हम्म। table, chair, pencil, नाइफ। नाइफ। board, knife, honesty, some feelings aa gaya, हम्म। like that. So if there's a good positive word, you can obviously write something positive. हम्म। The main thing is abstract or negative words. So for negative words, if I have to say, how do you overcome that negative? That should be मेरा पर्सनल अप्रोच ये है कि मैं नेगेटिव सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में ओके। जनरली जैसे वर्ड आता है फॉर एग्जांपल क्लास, ओके। राइट? तो क्लास हैज सो मेनी पीपल, अगर ये मैं एक सेंटेंस लिखा हूं तो मैंने क्लास को पहले यूज किया, ठीक है? हम्म। तो ठीक। लेट्स से अगर कोई नेगेटिव वर्ड है, ठीक है, फॉर हम्म। एग्जांपल फेलियर, ठीक हम्म। है? तो ठीक है। फेलियर, आई विल नॉट स्टार्ट द सेंटेंस विद फेलियर. I will start, I will put it in and I will write the solution to the failure in the beginning. तो एक सेंटेंस हो जाएगा कि preparedness prevents failure. फेलियर्स। ठीक है। Right? So this is my way of using passive voice. Failure मैंने end में लिखा, जो positive चीज है सेंटेंस में that is हम्म। in front. ओके। Preparedness. That is how you overcome negative. हम्म। Okay? तो negative जो words आते हैं उनको tackle करने का तीन तरीके हैं, दो तीन तरीके हैं कि पहली बात तो उसको होने ही ना दो, हम्म। ठीक है? अगर वो हो गया है तो मान के चलो कि कम हुआ, ठीक है? हम्म। एंड फाइन, अब जब हो ही गया है उसको ठीक भी तो करना है, तो यू ओवरकम इट. या। So that is my approach for negative words, how I do that. And sometimes there's abstract words: table, chair, knife. हम्म। So table का I had written in my SSB that table is the best friend of a student. Okay, study partner of a student. I'm using my study table, chair as model table, right? So उसको तो relate करो अपने आप से, because हम्म। back में you do not have a lot of time, right? So whatever you are thinking, think it in a positive way or word negative. Think solution oriented रहो, ठीक है? If there is a ओके। problem, then what is the solution? करना क्या है, कैसे ठीक करूँ मैं उसको? हम्म। That should be your approach in that. तो जैसे कि नाइफ आपने जैसा बोला, ठीक है? अब मुझे हम्म। बताओ आपने नाइफ कहाँ देखा है, आप बताओ मुझे किचन में। ऑनेस्टली, कहाँ कहाँ देखा? किचन में देखा है, किचन में देखा है। और कहीं देखा भी बताओ, है तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं। राइट? अब कोई यूपी रामपुर भी जा सकता है चाकू से, रामपुरी छुरी। राइट? है ना? तो मैंने नाइफ को किचन में देखा था, लेकिन राइट, नाइफ इज यूज्ड टू कट वेजिटेबल्स, हम्म। पुट बटर ऑन ब्रेड, राइट? हम्म। हम्म। इसको थोड़ा और हाई लेवल करना है कि सर्जन सेव्स लाइफ यूजिंग नाइफ, हम्म। ठीक है? ये और हाई लेवल हो गया. तो दिस हम्म। इज हाउ यू थिंक अलग अलग हम्म। डायरेक्शन में. ये एग्जांपल हो गया अपना एब्स्ट्रैक्ट वर्ड्स का, जो मैंने एब्स्ट्रैक्ट। टेबल और. हम्म। अब वर्ड्स आते हैं जैसे कि इमोशनल वाले. तो जैसे लेट्स से देयर इज अ वर्ड ऑनेस्ट, पीपल गो ठीक है। ब्लैंक, बहुत अच्छा वर्ड है. यहाँ पे कुछ लोग ईडियम्स भी डाल देते हैं, और कुछ फैक्ट्स ऑनेस्टी जैसा, इज द हाँ। बेस्ट पॉलिसी. पॉलिसी या। There's nothing wrong, ब्लैंक छोटे से बेटर ही है, बट आई हाँ। फील इट इज अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी, क्योंकि हम्म। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी आप भी लिख सकते हो, मैं भी लिख सकता हूँ,
सब लिख 100 लोग भी सकते हैं। लिख सकते हैं। हम्म। तो साइक को आपके बारे में क्या पता चला उस सेंटेंस से? कुछ नहीं। कुछ नहीं पता ठीक है। चला। तो जैसे एक सेंटेंस है दैट इज आई मेक इज ऑनेस्ट पीपल आर ट्रस्टवर्दी। दिस इज द सेंटेंस आई जनरली मेक जब ऑनेस्ट वर्ड मेरे को दिखाई देता है। देन दिस अनदर वर्ड कॉल्ड एज रिकॉग्निशन। हम्म। तो मेरे एसएसबी में पहले वाले में आया था दैट आई हैड रिटन कि गुड लीडर्स गिव रिकॉग्निशन टू द टीम। ओके। ठीक है। आप दूसरों के लिए क्या कर रहे हो? आपने गोल तो अचीव कर लिया, ठीक है, बट आपका जो छोटे से छोटा रैंक वाले टीममेट है वो खुश है कि नहीं? हम्म। देन देयर बेसिक वर्ड्स जैसे लव आ गया, ठीक है, हम्म। अगेन वो ब्रांड। भाई इतना अच्छी बात है। मैं लिखता हूँ कि लव शोज वार्मथ एंड कंफर्ट, हम्म। एक्सेप्टेंस, ठीक है, हम्म। रेसिप्रोकेशन, काउंटर पार्ट, होम। हम्म। तो कार्ड में इतनी अलग अलग चीजें आप देख सकते हो एक वर्ड के ऊपर। तो जैसे कि देन दिस कम्स दिस फौजी रिलेटेड वर्ड्स, ब्रेवरी, हम्म। करेज, हम्म। किलिंग सोल्जर, कंट्री, इंडिया, स्टफ लाइक दिस। रोग यहाँ आता पर है। हाँ। हाँ, you can build upon anything good. रोग जैसे आपने बोला, वर्ड बोला, तो रोग सी नाउ आई एम टेल यू व्हाट द अप्रोच मेरा पर्सनली क्या है। रोग इज अ नेगेटिव वर्ड। इसको ठीक कैसे करना है, ठीक है? या तो दो चीजें हैं, या तो बंदा रोग होगा ही नहीं या फिर हम्म। कुछ करके ठीक हो जाएगा। बोथ ऑफ देम रिक्वायर्स डिसिप्लिन, हम्म। राइट? So you can make the sentence, disciplined men do not get a rogue, they do हम्म। not go rogue. Again, but as I said, negative word came in the end, a passive voice. मेरा focus was on ऑन discipline. पॉजिटिविटी, कि लाइक हम लोग कैसे इसको Positivity. रिड्यूस कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हाँ, हैं। तो how do you reduce and overcome the situation? That should be your approach for negative words. और जैसा तो क्लीशे वर्ड्स जो थे, टेबल चेयर टाइप्स, उसमें थिंक ऑफ योर इमेजिनेशन। मून आ गया अगर हम्म। लेटेस्ट से, ठीक है, लुकिंग इन मून गिव्स क्रिएटिव थॉट्स, पोएट्री डाल दो उसमें, ठीक है, हम्म। स्टफ लाइक। मून लाइटिंग इनहेंस ब्यूटी ऑफ द नेचर। हाँ, राइट। हम्म। अगर नेचर ही इंडिया आ गया लेट्स से, तो हम्म। इंडिया इज फुल ऑफ डाइवर्स नेचर, फुल ऑफ कल्चर, डाइवर्स इंडिया कल्चर। रिप्रेजेंट्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यूनिटी एंड डाइवर्सिटी आ गया, हम्म। राइट? ठीक है भाई। तो प्रशांत, हम लोगों ने बहुत सारे वैट एग्जांपल्स के साथ हमने अप्रोच देख लिया, कैसे हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं नेगेटिव वर्ड्स को, और जो एब्स्ट्रैक्ट राइट, वर्ड्स होते हैं रैंडमली आ जाते हैं, उन पे कैसे अप्रोच करना है वो भी देख लिया। तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टेस्ट की तरफ, दैट इज SRT, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। तो इसमें तेरा क्या अप्रोच रहता था, और कैसे हम लोग कंसाइजली हम लोग ज्यादा से ज्यादा SRTs अटेम्प्ट कर सकते हैं, अगर ज्यादा करने होते हैं तो, अगर नहीं करने हैं तो हम लोग क्वालिटी कैसे हम लोग मेंटेन कर सकते हैं थ्रू आउट द टेस्ट। राइट। सो अभी तक वी हैव सीन दिस साइकोलॉजी टिल योर दैट वर्ड योर कार्ड एसोसिएशन दैट टेस्ट। हम्म। person is good. The psychologist is thinking candidate is good, but is he still good when the situation is there in front of him? हम्म। That is about SRT. So एक general SRT आती है कि the snake is, you are going somewhere and then snake comes. So what will you do? बहुत चीजें कर सकते हो आप, मार दो, पीट दो उसको, मार दो, देखते रहो खड़े होके, जाने दो। but right. So how do you approach SRT ना? Should be an ideal good human being. What should he be doing? राम कि राज्य let टाइप। us say, हाँ, मतलब सब कुछ अच्छा है यार, वो बेचारा सांप भी अपने घर जा रहा है, आप भी अपने घर जा रहे हो, उसका उसे भी भी कोई अपने दिक्कत नहीं, बच्चे आप भी पालने हैं। हाँ, राइट। तो everything should be assumed to be good, and if it is something negative, I should assume it to be mild, right? Generally situations SRT में जो होती हैं, they are negative, they are challenging. So there is this SRT कि in the before your final football tournament match, the captain gets injured, ठीक है, he हम्म। they can take up the responsibility, give a motivation talk, gather a team, and tell them that we can still win, like arrange the maneuvers, what are the details of football are, and then the team goes on, performs well, wins the title, हम्म। ठीक है। एक एक SRT था कि your you get a call कि your friend is like he is in hospital right now, what will you do? You have a presentation to give, ठीक है,
तो यू टेल अदर फ्रेंड्स टू गो देयर, क्विकली गिव द प्रेजेंटेशन 30 मिनट का, जल्दी से करके बॉस को बोलो आई एम रनिंग, एंड देन यू गो देयर, केटर योर, ठीक है। ऐसे ही another SRT is, अब तो शायद नहीं आती, पहले आती होगी, कि यू आर गोइंग विद योर female counterpart in the night after a movie and some three strange men come around you. He, so I'll take one example कि ऐसे में what is the assessor looking? Are you ready to leave the lady behind and run for your life? अपनी जान Or बचाओगे कि दूसरे की रक्षा करोगे? so if let's say if my counterpart is with me and we are there and three men guy, I will tackle them, make sure that she is safe, and we will make her into the nearest police station. Tell the police that there are few bandits on this particular road, ताकि मैंने तो बचा लिया, किसी हाँ। और को वो लोग harm ना करें. That is also social responsibility. हम्म। ठीक है, to tackle the negativity and make sure it doesn't happen again. हम्म। तो SRT का मेरा पर्सनल अप्रोच ये रहता है कि अंडरस्टैंड व्हाट द एसेसरी इज लुकिंग फॉर इस SRT को, अगर वो पूछ रहा है तो अब जैसे आपने एक SRT आती है कि यू सी योर फ्रेंड इन द बेसमेंट स्मोकिंग, हम्म। व्हाट डू यू डू? तो मैं जाऊंगा, उसको समझाऊंगा प्यार से, यार दोस्त के भाई है मत वो भी। अपना, हाँ। सम मेन दे जॉइन देम इन द स्मोक, ये भी करते हैं लोग, जो राइट? खुद पीते हैं दूसरे को क्यों रोकेंगे? राइट, वो अंदर से निकल के आते हैं कि ऐसी सिचुएशंस में आप करोगे क्या। तो एक एक और एग्जांपल मैं लूंगा, there's this society that I remember that he was, I even remember the words, that he was going for his exam and he saw three men beating up an old lady. He, ओके। so as my what I wrote, he immediately approaches them, mediates, stops them, talks about what is going on, rectifies the issue, secures the uh, हम्म। रेस्क्यू द ओल्ड वुमेन। area. ओल्ड लेडी, हाँ। हम्म। What I'm pointing out here is listen to or read the SIT again. He was going for an exam. There's like two situations एक के अंदर. हम्म। So your solution doesn't ends at rescuing the सिक्योरिंग lady. और रेस्क्यूइंग द ओल्ड लेडी। It ends at proceeds to exam hall, performs well in exam. So your answer to your SIT should be a round circle, nothing left behind. Then how you write your SRT, that if I have to talk about it, commas use karo. I generally avoid these connectors and the he will go there, then he will talk, then he will stop, then he will take the lady aside, then he will take a rickshaw to the college. He will give exam very wonderful. No. विल First of all, ट्राई शुड ये सब तो यूज ही नहीं करने। hey, you are going to the armed forces, so there is no scope of करूंगा, uncertainty. सोचूंगा। हाँ। नहीं होता, ठीक है, it will cost a lot. So this is which I generally avoid, will, should or try ऐसा चीजें, हम्म। and I use commas instead of connectors so that I can make it precise. आपका quality of your action, what is the solution to the SRT, it should be precise. ठीक है, हम्म। तो एक बहुत फेमस आता है ना, कि आप ट्रेन में जा रहे थे एंड इज दिस फायर, व्हाट विल यू डू? हम्म। ठीक है, हम्म। तो यू व्हाट द राइट कोर्स ऑफ एक्शन इज, यू रेज एन अलार्म, लोगों को पता चलना चाहिए, ठीक है, पुल द चेन डाउन, ठीक है, कीप पीपल असाइड, देन यूज द बैकवर्ड फायर करना। हम्म। एक्सटिंग्विशर. ठीक है, यू कैन नॉट बी लाइक यू टेल पीपल टू गो आउटसाइड द ट्रेन, देन यू पुल द चेन, राइट? मर गए। बोलते आग से तो नहीं मरे, लेकिन इसने जिंदा मार दिया खुद आके। हाँ, तो ये आप नहीं कर सकते. सो दैट सीक्वेंस शुड बी लॉजिकल, कि किस स्टेप के बाद क्या है. इश्यूज क्लैरिटी, कैंडिडेट में क्लैरिटी है, किसको पता है उस सिचुएशन में ये इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये करूंगा. तो दिस इज माय जनरल अप्रोच. अब एंड जो आपका लास्ट क्वेश्चन था कि नंबर ऑफ SRTs, तो मैं इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट आई डिड 34 एंड इन माय दिस अटेम्प्ट TGC वाला आई डिड 45. ओके। सो मेरे हिसाब से इट इज नॉट द नंबर, it is the quality of your responses. So you don't necessarily have to go 60 on 60 and assume कि you will get recommended. ठीक है, क्या? however मेरे हिसाब से 31 से नीचे कुछ नहीं चलेगा.
ठीक है। above 30, because I feel that the SRTs become repetitive. हम्म। हाँ, तो आप सिमिलर काइंड ऑफ, देखिए। हाँ, सिचुएशन होती हाँ, है। देखते हैं कि तुम्हारा रिस्पॉन्स तो चेंज नहीं हो रहा है, हर एक सिचुएशन सिमिलर हो रही है लेकिन तुम्हारा रिस्पॉन्स चेंज हो रहा है। हम्म। राइट। सो इफ यू आर गिविंग 60 रिस्पॉन्सेज पूरे के पूरे, then मेक श्योर यू आर कंसिस्टेंट विद योर आंसर। ठीक है। एक एक फुटबॉल टूर्नामेंट में तो आप वाइस कैप्टन से कैप्टन अज्यूम करके जिता दिए टूर्नामेंट। एक हाँ, क्रिकेट में यही हुआ तो आप जो है डर के भागे, कुछ वैसा और कुछ कर दिया। चलेगा। हम्म। कंसिस्टेंसी नहीं है। तो दैट कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्रू आउट योर साइक एंड योर एसएसबी। हम्म। ओके। तो मतलब एसआरटी में हम लोगों को ऐसा अप्रोच रखना है, कंसाइज रखना है, क्वालिटी मैटर करती है। 30 से 45 के बीच में रख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है। तो एसआरटी तो यार जनरली, आई विल हाँ, से कि 45 से ऊपर रखो। ठीक है। ओके। 45 से ऊपर रखो। हाँ, आई विल ठीक है, नॉट ठीक से है। कि 34 करोगे तो हो जाओगे, लेकिन आई विल नॉट गिव माय वर्ड। ओके। सो मतलब कुल मिला के ऐसा है कि एसआरटी वैसे यार बहुत ही सिंपल होती है कंपेयर टू टैट। लाइक हम लोगों को कुछ एसआरटी पिक्चर्स मिल जाती है, उसमें हम लोगों को जैसे कोई बंदा डूब रहा है, ठीक है, तो हम लोगों को पता है हाँ, कोर्स ऑफ एक्शन क्या होने वाला है, हम लोग कैसे रेस्क्यू करेंगे, कैसे उसको पानी उसका लंग से बाहर निकालेंगे, उसको बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं, हम लोगों को पता है उसको सीपीआर दे बचाने का। देंगे, हाँ, सीपीआर फैमिली को देंगे। कॉल कर देंगे। एक्सीडेंट्स का भी पता है। वही चीज जब एसआरटी में आती है तो हम लोग बहुत जल्दी लिख देते हैं, बस हम लोग को कॉमा कॉमा करके। लेकिन टैट में क्या रहता है, हम लोग को सब कुछ सोचना है, सबको लॉजिकली अलाइन करना है। तो यही खास बात है टैट की, कि वो आपका जो प्रॉपर फंक्शनिंग होती है ना माइंड की, वो चेक कर लेता है। कोई और टैट इज आल्सो लाइक व्हेन यू आर राइटिंग योर टैट ना, तो उसमें यू आर गिविंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्ड्स टू द साइकोलॉजिस्ट। ठीक है। बैट में गेट्स टू वन सेंटेंस, एसआईटी में फिर थोड़ा बढ़ता है, एसडी में फिर थोड़ा सा बढ़ता है, बट पैराग्राफ टैट इज में आ समथिंग जाता है, वेरी हाँ। मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्ड्स। ठीक है। हम्म। सो उसमें यू हैव अ लॉट ऑफ स्कोप कि कहाँ कहाँ आप जो है साइकोलॉजिस्ट फोकस कर सकते हैं। So that may I will say be very controlled, and someone had said ki how do I focus on my hesitation in that. हम्म। So be natural about it. जो मन में आ रहा है लिखो, but if you're not prepared, if you're prepared, then you can brainstorm and get good. And ऐसा कभी कभी होता है when you brainstorm and finally land up with some good responses ना, and when you're writing those same responses in your SSB, so your brain gets at some mental peace. हम्म। तो अरे यार ये तो देखा हुआ वर्ड है, जल्दी जल्दी लिख दिया। लिख जो देता हूँ इसको। जो जनरली आपको 10 सेकंड लग रहे थे वो 5 सेकंड में लिख दिया। नाउ यू आर एट अ रेस्ट कि नेक्स्ट वर्ड के लिए यू आर प्रिपेयर्ड। सो वैट के लिए घर पे प्रिपरेशन करना इज, आई विल हम्म। द की टू वैट। तो यार हमारा फिर टैट हो जाता है, वैट हो जाता है और एसआरटी हो जाता है। तो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग का एक लास्ट पार्ट है एसडी, सेल्फ डिस्क्रिप्शन। कुछ लोग बोलते हैं ये मैटर करता है, कुछ लोग बोलते हैं नहीं करता है। तो आज डिस्कस करते हैं इसके बारे में। तो तेरा क्या अप्रोच रहता है? यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है पुनीत का, इन एसडी वी कैन राइट सम ऑफ आवर वीकनेसेस एंड देन हाउ वी कैन ओवरकम। लाइक मेंशन कर सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि यार हमें वीकनेस खुद से क्यों देना, ठीक है, उनका काम है असेस करने का, तो खुद से मत दो। कुछ लोग ऐसे अपनी वीकनेसेस डाल देते हैं, नॉर्मल लाइट वीकनेसेस डाल देते हैं, उसको फिर ओवरकम करने का भी सोल्यूशन दे देते हैं। तो तेरा क्या अप्रोच रहता है? अबाउट दिस वीकनेस वाला चीज, आई फील दैट देयर इज नो नीड टू राइट वीकनेस, बट देयर इज स्टिल अ स्कोप ऑन थिंग्स यू कैन improve on. ओके। So if you are weak at something, you will improve on it घर पे। ठीक है। हम्म। तो why should I tag that particular thing? Let's say मेरा जनरल नॉलेज कम है, हम्म। ठीक है, why should I call it as a weakness and not something I want to improve? लाइक आई ये हैव अ जो नॉलेज बट आई वांट टू गेन मोर। and no one said that I do not have any knowledge. हम्म। ठीक है। Weakness is not having a knowledge. हम्म। ठीक है। तो एक इतना हल्का सा भी जो आप वर्ड सिलेक्शन है ना, वो भी आपके माइंडसेट को दिखाता है। तो इवन इफ लाइक अभी मेरे एसएसबी में ना, तो ही सेड कि एज अ साइकोलॉजिस्ट से कि थिंग्स यू वांट टू लाइक काइंड ऑफ पर्सन ऑफ यू वांट टू बिकम, ऐसा कुछ था। तो आई स्टिल स्टार्टेड थिंग्स आई वांट टू इंप्रूव इज। ठीक है। सो इंप्रूव वर्ड शो दैट देयर इज समथिंग। या, ठीक है। ही इज बिल्डिंग अपॉन दैट। यू तो ऑलरेडी हैव अ अबाउट, फाउंडेशन। हम्म। हाँ, weakness is not having a foundation, हम्म। right? So what I do is
I do not write anything negative in my parents wala section, your teacher slash employee wala section, the friend colleague wala section, or self. ओके। In my persona you want to become or things you want to improve on or your weaknesses, उसमें I write what I think I can improve on, and I simultaneously give examples of how I'm working on. So if I'm saying that I want to work on my physical, so then I write it. For that I go gym daily and go for running. Okay. If I'm ओके। saying that I want to improve on general knowledge, I will say that हम्म। I keep on reading articles on different topics to keep myself updated. हम्म। So in my improve knowledge section, I write things I can improve on and how I'm doing it. That हम्म। action wala part I definitely write. So this is the last section of अपना SD. पेरेंट्स वाले में देखो, अगेन राम राज्य, पेरेंट्स को क्या चाहिए मुझे बताओ। ठीक है, अच्छा बच्चा हो, ठीक है, हाँ। अच्छा करियर हो उसका, पोलाइट नेचर हो, बड़ों से अच्छे से बात करे, घर में मम्मी का हाथ बटा दे, ठीक है, पैर दबा दे, ठीक है, करियर ओरिएंटेड हो, दूसरों से अच्छे से बात करता हो, रिलेटिव से अच्छे से बात करता हो। सिंपल पॉजिटिव चीजें जो पेरेंट्स वांट इन देयर चाहते हैं। वर्ड। हम्म। हाँ, तो एज ऑफ आई रिमेम्बर मेरा एसडी में आई राइट कि आई एम अ चीयरफुल पर्सन, ठीक है, एंड माय पेरेंट्स लाइक दैट आई एम हार्ड वर्किंग, आई एम रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स एल्डर्स, आई एम करियर ओरिएंटेड, आई एम हम्म। इंटेलिजेंट, सो दे टेक माय say in the family decisions, and this mild thing I had कि they have a faith कि I will do something good in life, ठीक है। हाँ, तो एक पॉजिटिविटी छोड़ दो अपनी तरफ से कि हाँ। हाँ भाई, हैव अ पॉजिटिव थिंकिंग टुवर्ड्स दिस कैंड। हम्म। तो दिस इज हाउ आई राइट माय पेरेंट्स वाला। एम्प्लॉय में इट कम्स अ बिट टेक्निकल, आप ऑफिस जा रहे हो, अगर इफ यू आर नॉट गोइंग आउट टू ऑफिस देन राइट अबाउट टीचर्स, साइकोलॉजिस्ट स्पेसिफाइज फॉर वर्किंग कैंडिडेट्स इट इज एम्प्लॉयर, एंड फॉर नॉन वर्किंग इट इज योर टीचर्स, एंड फॉर 10 plus 2 people it is again teachers. तो उसमें व्हेन यू आर इन एन ऑफिस व्हाट डू यू वांट फ्रॉम पर्सन? सबसे पहले तो इंटेलिजेंस, ठीक है, और गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है। The person should be enthusiastic about the work, ठीक है, he should volunteer कि सर मैं करूंगा ये काम, ठीक है, he should support his teammates, ठीक है, he should be good in technical skills, he should maintain हम्म। a work environment, an environment which is safe for women, right, हम्म। and someone who is focused about his career, someone who is creative, ठीक है, things like these. So all these are positive characters that you need इन एन एम्प्लॉय। तो अगर आप जैसे अंकुर भैया किसी को जॉब दे रहे हो, तो यू हम्म। विल नॉट वांट कि कोई लॉग इन करके बैठ जाए और काम ना करे। काम ना करे जैसा कोविड में हो रहा था। हाँ, जैसे हो रहा था, राइट। तो ऑल दीज पॉजिटिव थिंग्स दैट इज रिक्वायर्ड इन अ लेट अस से कैंडिडेट एंड एम्प्लॉय। एम्प्लॉय। सोचो या। अपने बारे में, दिस इज अबाउट मी व्हेन आई वाज वर्किंग इन माय कंपनी, this is the kind of person I was. I had a good bonding with my immediate senior. He happened to be from my own college, so जानता था मैं, अच्छे से हम्म। बात होते थे। He had some faith in me, तेरा तो तेरे को मैंने देखा है, तेरी पढ़ाई में तो अच्छा है ना, काम कर चले हम पर, stuff like that, है ना। तो how, what kind of relationship you have with your employer, analyze it and write it down. If there is negative, कोई आप किसी पसंद नहीं करते, बात करो उससे, उससे मिलने की कोशिश करो, ठीक है, रेक्टिफाई योर ओन लाइफ अच्छे से, आपका एसडी अपने आप अच्छा हो जाएगा, राइट। हम्म। बिकॉज एसडी, लुक इफ यू गेट एसडी, पेरेंट आपकी लाइफ में कौन कौन है, ठीक है, हम्म। अपार्ट फ्रॉम वन पर्टिकुलर, आपके पेरेंट्स हैं, आपका एम्प्लॉयर है, दोस्त है, भाई बंधु है, और आप हो, हम्म। ठीक है, और कहा और किसको अब साइकोलॉजिस्ट ये तो नहीं पूछेगा कि ट्रैफिक पे जिससे मिले थे वो आपके बारे में क्या सोचता क्या है, सोचता है। राइट। हम्म। तो हाँ, पीपल हु आर इन क्लोज और अ बिट फादर ऑफ योर सर्कल लाइफ में, ठीक है। तो अगर आप उनके साथ अच्छे हो, वो आपके साथ अच्छे हैं, तो अगर आपने एसडी याद भी नहीं किया, कुछ नहीं प्रिपेयर किया, तब भी आप अगर एसडी लिखने जाते हो, अंदर से अच्छी ही बातें लिखी, बस आप अच्छे, दुनिया अच्छी वाली चीज। तो लिव अ गुड लाइफ फॉर दैट। देन व्हाट इज द नेक्स्ट वन? फ्रेंड्स कलीग्स। या और कलीग्स और फ्रेंड्स या। हाँ, तो फ्रेंड्स में आई थिंक दोस्त कैसा होना चाहिए, ठीक है, अगेन सवाल वही आ जाता है, रिलायबल हो, दोस्त कैसे, जो दुख दर्द में काम न आए, राइट, हम्म। रिलायबल होना चाहिए, ट्रस्टवर्दी होना चाहिए, जिसके हम्म। साथ आप हंसी खुशी खेल कोऑपरेटिव सको, होना चाहिए। right? हाँ। हाँ, हम्म।
अप्रोचेबल होना चाहिए कि भाई मेरे मन में ये बात है, सुन वो आपकी बात सुने, आप उसकी सुनो, ठीक है। हम्म। एंड ही शुड हैव गुड एम्बिशियस गोल्स सो दैट ही कैन हम्म। बी अ गुड स्टडी पार्टनर, हम्म। राइट। सो दैट यू एंड आई, भाई को जानते हो आप, हम्म। देयर स्मॉल ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, वी हैव हम्म। सेम goal of getting into the armed forces. We complement each other, हम्म। we study together. We help each This other is what, to study and prepare for the SSBs yeah, and other exams. हम्म। right. Someone who is encouraging कि यार हम्म। ये फॉर्म निकला है भर दे, आपको नहीं पता फॉर्म आया बट आपका दोस्त फोन हम्म। करके बोल रहे हैं कि भाई फॉर्म आ गया, हम्म। दैट इज द काइंड ऑफ पीपल यू शुड हैव। अगर लास्ट डेट कल है, दोस्त का कॉल आ जाना चाहिए, भाई तूने फॉर्म भरा कि नहीं भरा। हम्म। दैट इज द काइंड ऑफ पीपल यू रिक्वायर इन लाइफ, दैट केयर अबाउट यू, हम्म। ठीक है। देन देन यू शुड बी अ पर्सन हु टेक्स एवरीवन अलोंग, कोई पीछे ना छूट जाए, ठीक हम्म। है। दिस इज द लाइन आई से राइट माय एसडी। देन यू शुड हैव अ फन लविंग पर्सनालिटी, आपका बिहेवियर दूसरों के साथ अच्छा होना चाहिए, तो दैट इज समथिंग योर फ्रेंड शुड से अबाउट यू। हम्म। देन कम्स सेल्फ वाला पार्ट। सेल्फ में माय पर्सनल अप्रोच हियर इज दैट मैं अभी तक के तीनों सेक्शंस को बस कंबाइन करके लिख देता हूँ, जैसे सब लोग मेरे बारे में सोचते हैं वही मैं अपने बारे में सोचता हूँ। बिकॉज दैट कंसिस्टेंसी ऑफ कैरेक्टर। हाँ। जो अभी, अगर आपका साइक आपके पेरेंट्स से मिले, टीचर से मिले, दोस्त से मिले और आपसे मिले, तो उसको लगना नहीं चाहिए ना कि मैं दो अलग अलग लोगों की बात कर रहा हूँ, है ना। तो मैं इफ आई टॉक अबाउट माय सेल्फ वाला जो सेक्शन है, आई से दैट हम्म। आई एम versatile और ऑलराउंडर, ठीक है। आई नो डिफरेंट थिंग्स, सम हम्म। एलिमेंट्स ऑफ पीआई मैं सेल्फ में डाल देता हूँ, ठीक है। आई लाइक आई मेक पर्सनली आई मेक फ्रेंड्स इजीली, सो आई हम्म। राइट दैट थिंग, ठीक है। आई हैव गुड टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, व्हाट आई डू इज आई गिव टाइम टू माय स्टडीज एज वेल एज माय हॉबीज, तो वो चीज आई राइट। सो एवरीवन हैज दिस स्ट्रेंथ दे सी इन देयर इंटरव्यू, राइट। हम्म। हम्म। वो चीज लिखो यहाँ पर, ठीक है। एसडी में आपने कुछ अच्छा लिखा है तो उसको लिखो यहाँ पर, लिखना चाहिए ना कि यहाँ पे और वहां पे सेम चीज। हम्म। So this is how I am. And then I write a bit about my nature, that I'm cheerful. Okay, I like to take people along, trustworthy, all of that thing, हम्म। career oriented basis. So this is how I uh, हम्म। structure my self wala section. हम्म। Question number 4 जो होता है. हम्म। A bit of summary of all the first three sections. Something from your like salt जो डालते हैं ना हल्का सा, हाँ, नमक लास्ट में वो जो ऐसे करके डालता है। हाँ, हाँ, हाँ। तो समथिंग फ्रॉम योर स्ट्रेंथ्स इंटरव्यू में जो आप बोलते हो, एंड अगर कुछ आप अपने पीआई की मेथड डाल सकते हम्म। हो, दिस इज हाउ आई क्रिएट माय सेल्फ वाला पार्ट। एंड थिंग्स यू वांट टू बिकम, तो आप आर्मी में जाना चाह रहे हो, एयरफोर्स में जाना चाह रहे हो, नेवी में, तो यू शुड बी प्रोफेशनल अबाउट योर ऑर्गेनाइजेशन, राइट। हम्म। देन इफ यू आर गोइंग देयर, तो उसमें आप जो भी चीज आपको लगता है कि टू इम्प्रूव सो दैट यू कैन गेट थ्रू एसएसबी, अपने आप को अच्छा करने के लिए, और इवन थिंग्स दैट आर नॉट स्पेशली रिलेटेड टू एसएसबी, ठीक है, हम्म। दैट यू कैन राइट। डू नॉट राइट एनीथिंग वेरी नेगेटिव, हम्म। कंपैरिजंस किसी, ठीक है। अपने हैबिट्स जो आपके हेल्थ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज मत लिखो, हम्म। स्मोकिंग हम्म। ड्रिंकिंग टाइप, ठीक है। इंटरपर्सनल स्किल्स में इशू है कि आप यू आर शाय, वो उतना मत लिखो। इफ यू आर वेरी शाय और इंट्रोवर्ट पर्सन, instead of that write that I want to further work on my हम्म। communication skills or हम्म। further work on my uh, public speaking skills. हम्म। So when you add that further, na further is what it is an adjective or adverb, right? हम्म। तो वो चीज खिल के आती है कि अच्छा हम्म। ये बोलना चाह रहा है कैंडिडेट। अच्छा। ऐसा नहीं है कि इसके पास है नहीं, है इसके पास, लेकिन ही वॉन्ट्स टू इम्प्रूव, ही वॉन्ट्स टू गेन हाँ, मोर नॉलेज। there's no limit to how much you can improve, na? या। So even हम्म। after one talking about far future, one becomes an officer, he still keeps on हम्म। learning, ठीक है। हम्म। इवन देयर आर पीपल जो 80-80 साल की एज में मैराथन करते हैं, देयर इज नो हम्म। एज लिमिट, या। राइट। यू कीप ऑन इम्प्रूविंग, तो राइट दैट यू वांट टू इम्प्रूव, नॉट टू इनकलकेट। इनकलकेट मतलब हम्म। खुद में कहीं से ऐड करना, शो हम्म। दैट यू ऑलरेडी हैव इट एंड यू वांट टू इम्प्रूव। ओके। तो कुल मिला के जो हमारी एसडी होती है, जो हम लोग एक आइडियल बेटा बनना चाहते हैं, आइडियल वो एम्प्लॉय बनना चाहते हैं एम्प्लॉयर के प्रति, या अपने कलीग्स को हम कैसे देखते हैं, हम लोग को एक आइडियल फ्रेंड कैसा लगता है,
वैसे ही हम लोगों को उन लोगों के नजरिए में बनना है। ठीक है, वही चीज हमें पोर्ट्रे करनी है। हम जैसे अपना सेल्फ हम लोग कैसे देखते हैं, जैसे बाकी सब देख रहे हैं, वो जो उनका नजरिया है हमें देखने का, वही नजरिया हमारा है कि नहीं, ये ऐसा तो नहीं है, देर इज अ राइट। गैप। अब और फॉर पीपल हम्म हु हैव नॉट रिटन देयर एसडी अभी तक, हम्म अपने ये फ्रेंड्स फैमिली टीचर से बात करो कि कैसा हम्म हूँ मैं। ठीक है, बताओ भाई, बताओ मुझे। हाँ बताओ। कैसा लगता हूँ मैं तुम लोगों के लिए, अच्छा दोस्त हूँ कि नहीं, बेटा हूँ कि नहीं, काम करता हूँ कि नहीं एम्प्लॉयर के लिए, वो तो खुद वट पता एवर चल दे टेल जाएगा। यू, वट एवर दे टेल यू, डोंट जस्ट decorate it up and write in your SD. Work on that so that वो naturally अंदर से। If I take my own example, अपनी पहली एसएसबी में जो मैं गया था ना, मैंने अपनी लाइफ का पहला एसडी वहां बैठ के बनाया और मैं सबमिट करके आ गया हूँ। अच्छा। ठीक है। हाँ। हाँ अब मेरे पास नहीं होगा, ये मैंने हाँ स्क्रैच से दोबारा बनाया था, जो हाँ। अभी टीजीसी था। तो इफ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड इनफ, अंदर से अच्छी चीजें निकलनी चाहिए। हम्म, Right. So that is my personal approach for SD and inculcate in yourself. That is, I would say. हम्म, आपको बोलने यार एक चीज और है, मैंने ये भी सुना है बहुत सारा कि हम लोगों को सीधा ये चीजें नहीं मेंशन करनी चाहिए, एडजेक्टिव्स। तूने भी सुना होगा का। कि यार इंटेलिजेंट, स्मार्ट, ओबीडियंट, डेडिकेटेड, हेल्पफुल, मतलब कुछ लोग बोलते हैं ना कि ऐसे कुछ सेंटेंसेस यूज करो कि ताकि वो इनडायरेक्टली दिखे कि यू आर हेल्पफुल, अडेप्टेबल, डेडिकेटेड एंड यू आर ओबीडियंट। तो तेरा इसके ऊपर क्या मानना है कि मतलब हम लोग को डायरेक्टली, जैसे तू तो मेंशन करता है, ठीक है, और मैंने प्रद्युमन से भी बात करी थी और कार्तिक से भी हम लोग डिस्कस करते रहते हैं, तो हमारा तो यही है कि हम लोग यूज करते हैं, तो कुछ लोगों का मिस वो रहता है ना, मिथ रहता है कि यार यूज करना है नहीं करना है, तो उस पे क्या रहना है? उसके लिए I feel that SD and PIQ and your blank image, हम्म they are very similar इस मामले में. That is something you can come prepared from your home and portray as it is. There is no question asked. TAD में there is an image, lecture में there is a card, ठीक है, PCT में there is a structure. There is a question and you have to answer it. हम्म यहाँ पे there is no question. हम्म Or if there is, you already know the question घर पे. So why do I miss that opportunity अपने आप को portray करने? हम्म That is why I feel use करो. Tell about yourself. The question is tell me about yourself. SD अगर आप if I have to submit a whole of the SD, तो उसका मतलब ये है कि बताओ अपने बारे में, मैं जानना चाहता हम्म हूँ. Right? So I feel it is like a opportunity where you can portray yourself the maximum. So avail that opportunity. Use adjectives. Do not make it like integrity, honor, ऐसे बड़े बड़े words which not feel कि naturally नहीं निकल के आ रहा. ये पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ। हाँ. हाँ. वो psychologist is an officer. He knows कि क्या natural है क्या नहीं. And he has seen enough candidates more brilliant than you, even than me, than anyone else. Okay? हम्म So you cannot fool your assessors. Okay? So it is better to work on yourself instead of finding tips and tricks कि कैसे I can get. हम्म ओके, तो प्रशांत, हम लोगों ने इस वीडियो में स्टेज 1 के बारे में बात की, OIR, PPDT, फिर स्टेज 2 में जो हम लोग साइक टेस्ट देते हैं, उसमें टैट वैट SRT, अब SD भी हमारा कंप्लीट हो गया। मैंने सोचा नहीं था कि हम लोग इतना डिटेल में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि हमारा जो पार्ट 1 है वीडियो का वही इतना लंबा हो गया। तो थैंक्स प्रशांत फॉर Right. कमिंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म एंड हेल्पिंग ऑल ऑफ अस हु आर वाचिंग दिस वीडियो। एंड कुछ कहना चाहेगा And I इस पार्ट में? हाँ। इस पार्ट में तो I would say it was really enjoyable because the discussion जो था it was engaging and मैं थोड़ा सा once I start speaking तो I मैं leave words very easily. Discussion भावनाओं मेरे में बह बहते ही जाता जाते है। हैं. Right, kind of like that. So this part mein, I really liked that the questions of people, they were actually genuine things which I also felt during my SSB. या जैसे जो stage 1 के लोगों के questions थे, how do you हम्म feel when you do not get through? I had an हम्म year where I could not get हम्म through. हम्म I hope that whatever my experience is or my approach is, it हम्म helps people one way or the other. हम्म And one last thing I would like to say is सुनो सबकी, करो अपनी. ठीक है, क्योंकि जब सबकी सुनना भी काम ना आए तो फिर हम्म वो अपना हाथ जगन्नाथ बचता है कि जो आप ही हो जो हो. जो राइट. सो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वट एवर सिचुएशन यू आर इन।
जो आप ही को उस सिचुएशन से बिकॉज बाहर भी निकलना है, और आप उसी अपने एक्शंस की वजह से ही उस सिचुएशन में आए हैं। हाँ, right. Because as a kid, you did not have control over your upbringing, हम्म। right? But as an adult now, you have 100% responsibility of who you are as a person, right? तो कोई भी YouTube वीडियो, कोई भी बुक, कोई भी मेंटर आपको वहां पे कमांडर्स में आके कान में आंसर नहीं बताएगा कि ये सॉल्यूशन है। लगा You दो। have to do it yourself, right? भाई प्रशांत, जैसे मैं भी पता है, मैं वीडियो बनाना चाहूँ तो यार हम लोग बहुत पहले रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो मैंने सोचा यार कि जो हमारे कैंडिडेट्स हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, वो लोग क्या सोच रहे हैं भाई, उनके क्या क्वेश्चंस है ना। तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत लगती है, कम्युनिटी पोस्ट डालता हूँ, फिर क्वेश्चंस पूछता हूँ, फिर हम लोग आते हैं। तू समझ रहा होगा, पूरी प्रोसीजर तूने देखा ही है। Actually, it is better, na? Because one thing is telling the approach, the other thing is clarifying doubts. हम्म। Okay. So people might not relate to my approach, but they might find some solution in when I clear the doubts. दैट्स So वाई। that is a better thing कि आप just इंटरव्यू लेने की जगह you have a whole discussion कि लोगों को क्या चाहिए. तो लोगों की जो हमें पता चलती है ना यार, मैंने देखा है कि जैसे तेरे साथ हुआ, 3 बार स्क्रीन आउट, पूरा 1 साल ऐसा था जिसमें तू, तुझे भी ऐसा लग रहा हो कि ये हो क्या रहा है जिंदगी में। No achievement at all. हाँ भाई, उसी साल में 5 बार रेकमेंड हो गए हैं, मैं यहाँ पे स्क्रीन आउट ही हो रहा हूँ। कर क्या रहा हूँ मैं। तो वो सब चीजें यार, अच्छा लगता है कि यार इससे ना पॉजिटिविटी स्प्रेड हो। मैं चाहता हूँ कि लोगों को यार होप्स मिले कि यार अगर आप स्क्रीन आउट हो रहे हो कंजिक्यूटिवली, तो इट्स नॉट अ बिग डील। आप उससे बाहर आ सकते हो, अचीव कर सकते हो अपने ड्रीम्स को। Like, that hope is very important कहीं से भी मिले कैसे भी मिले. वंस अगेन थैंक यू प्रशांत। हम लोग मिलेंगे सेकंड पार्ट में, ठीक है? उसमें और भी मस्त डिस्कशन होगा हमारा, जीटी और पर्सनल इंटरव्यू और कॉन्फ्रेंस को हाँ, लेके। GTA तो मेरा पर्सनली थोड़ा कुछ ज्यादा ही फेवरेट है. So we'll talk there. Definitely, definitely. Thank you all for watching this video. If you haven't subscribed to my channel, please subscribe it, share it among your friends who are visiting or attending their SSBs. And thank you for watching us. जय हिंद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।